हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं डेली नॉलेज स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स a procurement of funds and utilization of funds. B. Management of funds. C. Allocation. D. Insurance. ऑप्शन है इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Funds are required for a purchase of land or building. B. Purchase of machinery. C. Purchase of another fixed asset. D. All of the above. ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Which report gives a review on the profitability of a business? A statement of changes in equity. B. Cash flow statement. C. Balance sheet. D. Income statement. ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। The term financial statement covers a profit or loss statement. B. Balance sheet and profit or loss statement appropriation account. C. Profit or loss statement and balance sheet. D. All of above are false. ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Which of the following is true about financial statements? A financial statement gives a summary of accounts. B. Financial statements can be stated as recorded facts. A. Only A. B. Only B. C. Both A and B. D. None of the above. ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Schedules attached with the balance sheet forms a part of the financial statements. A true. B. False. ऑप्शन है इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Which of the following statements are true? A. Financial statements are only interim report. B. Financial statements are also known as annual records. C. Financial statements are historic. A. Both A and B. B. Both A and C. C. Both B and C. D. A. B. C. ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। P or L statement is also known as a statement of operations. B. Statement of income. C. Statement of earnings. D. All of the above. ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Which statement shows the flow of cash and cash equivalents during the financial period? A. Statement of changes in equity. B. Cash flow statement. C. Balance sheet. D. Income statement. ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Subtracting all expenses from revenues yields a net profit, net loss. B. Carrying value. C. Long-term assets. D. Net liabilities. ऑप्शन है इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसे ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Balance sheet of a company is required to be prepared in the format given in a. Schedule 3 Part 2. B. Schedule 3 Part 1. C. Schedule 3 Part 3. D. Table A. ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। As per Companies Act, the balance sheet of a company is required to be presented in a horizontal form. B. Vertical form. C. Either horizontal or vertical form. D. Neither of the above. ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Which of the following is not required to be prepared under the Companies Act? A. Statement of profit and loss. B. Balance sheet. C. Report of directors and auditors. D. Funds flow statement. ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। According to prescribed order of assets in a company's balance sheet, assets should be shown. First of all, at non-current assets. B. Current assets. C. Current investments. D. Loans and advances. ऑप्शन है इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही।
in a company's balance sheet appear under the head non-current assets? A. Goodwill. B. Patents. C. Vehicles. D. All of the above. ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Calls in arrears appear in a company's balance sheet under A. Reserve or surplus. B. Shareholders' funds. C. Contingent liabilities. D. Short-term borrowings. ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Calls in advance appear in a company's balance sheet under A. Share capital. B. Current liability. C. Long-term borrowings. D. Reserve or surplus. ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Bills receivables appear in a company's balance sheet under the subhead A. Current investments. B. Cash equivalents. E. Trade receivables. D. Short-term loans and advances. ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Which of the following options is not recorded in the balance sheet? A. Cash. C. Building. B. Rent expenses. D. Goodwill. ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते ही। Certain assumptions are essential to prepare financial statements. A. True. B. False. ऑप्शन है इसका सही उत्तर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।